Live from New Delhi, you're watching a special 2-hour edition of DD India News Hour, India's voice to the world. I'm Ramesh Ramachandran, and with me is my colleague Mark Lin. Namaskar. Coming up in the next hour. Leads convert to wins as the BJP-led NDA or National Democratic Alliance maintains a simple majority of over 290 seats in India's parliamentary election. India's Prime Minister calls the NDA victory a historic feat. Opposition alliance makes significant gains. NDA alliance partner, the Telugu Desam Party's N. Chandrababu Naidu, set for a comeback in Andhra Pradesh. Naidu to take oath as Chief Minister on the 9th of June. And the BJP makes major gains in Odisha legislative election, the Legislative Assembly election, crossing the halfway mark in the State Assembly, and is going to end the Chief Minister Naveen Patnaik's 24-year rule. All right, let's start, Mark, with the results of India's general elections. Now, the counting of votes is underway for India's parliamentary election. The counting is also taking place for the assembly elections in Andhra Pradesh and Odisha and by-elections to 25 assembly constituencies. Yes. And as per the latest trends for the Lok Sabha elections, the BJP-led NDA is set to return to power as it leads in close to 300 seats. However, the opposition India Bloc or Indie Bloc is putting up a strong fight. Now, the trends available for 542 out of 543 seats so far show the NDA is leading on more than 290 seats, while the opposition alliance has made significant gains and is leading on over 230 seats. Prime Minister Narendra Modi, a senior BJP leader, has won the Varanasi parliamentary seat. The Prime Minister defeated the Congress's Ajay Rai with a margin of 1,52,000 votes. While in Gujarat, Home Minister and senior BJP leader Amit Shah won the Gandhinagar seat with a margin of more than 740,000 votes against his opponent from the Congress party, Sonal Patel. Now, Anurag Thakur, the BJP's candidate from Hamirpur Lok Sabha seat in Himachal Pradesh, defeated the Congress's candidate Satpal Raizada. Expressing happiness, Anurag Thakur thanked the people of Himachal Pradesh and said that the BJP's victory was certain under the leadership of Prime Minister Modi. कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है 5वीं बार लगातार जिताने का, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है. All right, let's now listen to some more reactions coming in. बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहाँ मिली है. मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने न आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया. The BJP candidate Kangana Ranaut has won from the Mandi Lok Sabha seat in Himachal Pradesh. This is her electoral debut and she won by a margin of 74,755 votes.
नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है, जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीज़ें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। Disappointing, given that we worked very hard, we worked very hard. We ran a very positive campaign. We talked about the real issues that were facing people. We did not get into the temptation of divisiveness or lies as our competitors did. And the results are there that 3.4 lakh people of Tiruvandhuram came out and supported us, which is a record number of people. We have never received these numbers of votes. My commitment to Tiruvandhuram and the people of Tiruvandhuram remains steadfast. 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते। गृह मंत्री जी ने जहां पार्टी के प्रदर्शन पर हम लोगों को बधाई दी, वहीं एनडीए की बैठक का भी जिक्र किया। कल वो बैठक है, हम लोग जाएंगे उस बैठक में। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। इस प्रदर्शन का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जिन लोगों ने तीसरी बार बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अभी काउंटिंग चल रही है और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं जो हमारे पक्ष में हवा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। काउंटिंग में 7 सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। Meanwhile, India's Prime Minister Narendra Modi on Tuesday thanked the citizens for quote-unquote expressing their trust in the BJP-led National Democratic Alliance for the third consecutive time in the parliamentary elections 2024. He wrote on social media platform X, and we quote, People have placed their faith in the NDA for a third consecutive time. This is a historic feat in India's history. I bow to the Janata Janardan for this affection and assure them that we will continue the good work in the last decade to keep fulfilling the aspirations of people. I also salute all our Karyakartas for their hard work. Words will never do justice to their exceptional efforts, unquote. All right, Mark, time to bring in our guests on this special 2-hour edition of DD India News Hour. With us in the studio is Yuvraj Pokharna, a political analyst. And also we are told some other guests will also join us, Mark. Right. We have, I think we have Shekhar Iyer joining us also remotely, I believe. He is a senior journalist. Yes, there indeed. we see him. Mr. Iyer, welcome to DD India News Hour. The same to you, Mr. Pushkarna. Now, Pokharna, I beg your pardon. If I can start with you, Mr. Iyer, for the benefit of viewers tuning in from India and around the world, why don't we begin by asking you to put the verdict as it's available now in the proper perspective and context for our viewers. What are the big takeaways or highlights from the result that we know so far? Well, the broad big picture is NDA is coming back to power. Prime Minister Modi will be entering his third term in office. And the second thing is BJP did suffer some loss of seats in important states like Uttar Pradesh, Rajasthan. And its allies did not do as well in Maharashtra. And despite a lot of efforts in Karnataka also, and as well as in Tamil Nadu, the results were not to the expectation or did not reflect the hard work put in by the BJP rank and file. And this is as far as this goes, but the fact remains is the opposition has reasons to feel that, that their campaign has ensured that the number has gone up and the NDA alliance number has come down. But at the same time, they do not have enough numbers as to stake claim to form a government. And
right now what we are seeing is that BJP-led NDA, this is going to be more of an NDA government than a BJP-only government. So you are going to see the style of NDA form of functioning, which would mean that there would be more consultation with the allies. But at the same time, just as Vajpayee was not prevented by the fact that he was heading a coalition government or an NDA government from taking some very big decisions. Similarly, people are expecting Prime Minister Modi to launch his third term in office with a lot of important decisions, which could be announced in the next 100 days or so. There will be no change in that. And we will soon hear from the Prime Minister this evening as to how he looks at the mandate. He has already tweeted, thanking the people for reposing faith again in NDA. Because for either a party or for a coalition to return to power for a third time is not a very simple matter. It has required a lot of effort, a lot of work. You have seen how the Prime Minister's first term saw a lot of improvements on the ground in terms of delivery of many flagship programs. Similarly, in his second term, more programs were added, and we also face crises like the COVID-19 and how we overcame, and world's largest immunization program was carried out. There are several things that have happened. So this third term is going to be a lot different from the first two terms, but then one can always see surprises when it comes to Modi's style of governance, where I expect the Prime Minister to go ahead with his plan for Viksit Bharat. Thank you. Mr. Iyer, the BJP's vote share has actually remained more or less the same in terms of percentage. Of course, in absolute terms, it's gone up. After all, the size of the electorate too has gone up. But when we look at that, and it reflects in a loss of seats to a large extent, would you say that the opposition alliance getting together and holding together at least as a pre-poll alliance and their combination and the arithmetic has actually been, prevented the BJP from a landslide victory? Definitely. You see, if the BJP's figures have gone down, it means some of the things the opposition has got it right. And one, as you mentioned, is the pre-poll alliance and the fact that there was a very aggressive campaign both by Congress leader Rahul Gandhi as well as by Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav in the last 3-4 phases of the campaign. And we could see the impact in Uttar Pradesh. See, the performance of Samajwadi Party has come as a very big surprise for the BJP, because they always felt that they would improve upon the performance of 2019, but that has not happened. So which means a lot of factors have gone into where the people have voted this time in Uttar Pradesh. But at the same time, one can see that, opposition did not get that enough number of seats so as to, immediately say that, they will form the next government. That is one. And second thing, all the doubts about EVM which the opposition was, constantly airing in the last 2-3 days, that have died down now. Otherwise, yesterday also they were talking about, appealing to officials as well as raising about how the EC has conducted. Now all those things have vanished because one of the world's largest democratic exercises happened, and we must congratulate the Election Commission for doing what it has done, despite facing a number of uncalled for criticism, I would say, and doubts being raised at one quarter or the other regarding some issues, which settled issues. But right, Mr. Iyer, do stay on. We'll come back to you momentarily. In the meantime, let's cut live for the latest visuals coming to us from the BJP headquarters here in New Delhi, where Prime Minister Narendra Modi is about to address the party workers. स्वागत कर रहे हैं, पूरी देश की दुनिया की लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। तीसरी बार जो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए ऐसे व्यक्ति का कैसे स्वागत होता है, और विनम्रता से सभी कार्यकर्ता जनता का अभिवादन का स्वीकार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं।
मोदी मोदी मोदी। बोलेंगे ना, जानदार लग नहीं रहा है कि कोई माहौल में। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर बैठे। आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी भारी वोटों से फिर एक बार सांसद चुने गए हैं। उनका जोरदार तालियों से हम यहां पर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी गुजरात से जोरदार वोटों से जनता ने चुनकर भेजा है। हम भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष जी का मंच पर जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये चुनाव हमने सभी देश भर के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, ऐसे आदरणीय नड्डा जी को मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन यहां हम सब के समक्ष रखे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विजय उत्सव पर मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी
समर्थक, कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों, एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन
पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन रही है। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे, उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट का शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख उसको उन्होंने आत्मसात किया था। वो जानते थे गरीबी क्या है, वो जानते थे कि गरीबों का नेतृत्व करने की क्या आवश्यकता है, वह जानते थे
कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और मुझे याद है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है। यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी, एक बार नहीं अनेकों बार। ये विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, ये विपक्ष की खिसियाहट बोलती है,
ये विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण ये नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और ये अवसरवादी गठबंधन यह जिस तरीके से काम करता रहा है, लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और इसके कारण ये बौखला गए हैं। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। समय आ गया है कि बारंबार आपको भारत की जनता क्यों आपको गिरा रही है, क्यों आपका साथ नहीं दे रही है, इसका आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गठबंधन एनडीए का मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और देश को आगे ले जाएगा, इस बात का हम सबको विश्वास है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में एनडीए का एक एक कार्यकर्ता भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपके नेतृत्व में उसको हम सपना को पूरा करेंगे और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं इसके पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मार्गदर्शन मिले, मैं उससे पहले देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, समग्र एनडीए परिवार की ओर से और देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण करके, माला पहनाकर उनका स्वागत हम सब लोग करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो देश को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है।
हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को
जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं।
मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में
देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा।
और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है,
भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाएं, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए
उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, you are watching the live coverage of India's Prime Minister Narendra Modi's victory speech of sorts. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Right, so if you were just tuning in, we have just covered the Prime Minister Narendra Modi's speech live from the BJP headquarters in New Delhi. The Prime Minister addressing party workers and compatriots alike. शक्ति केंद्र में जाएंगे। Right, so we're watching the live coverage of Prime Minister Narendra Modi's speech from the BJP headquarters in New Delhi, where he addressed party workers and compatriots alike on the way forward over the next several years of his third consecutive term in government. Mark. Indeed, the Prime Minister spoke about the successes of the last 10 years as well, and he thanked all the karyakartas or the party workers, and he's also looking forward to a historic third term in office. The others who were there on the panel sitting with him were the Defence Minister Rajnath Singh, who was also won by a significant margin, as well as Amit Shah, the Home Minister, was won by over 7 lakh votes, and the General Secretary of the Bharatiya Janata Party, Vinod Tavde, was conducting that event. We'll turn to our guests. Chaksu Roy,
who is analyzes the legislative affairs. PRS Legislate is joining us here in the studio, and we have with us Shekhar Iyer, I presume, who's no, we don't have Shekhar Iyer with us who's online. Shekhar Iyer is with us, I'm told. Yes. So let's turn to Mr. Roy. What do you make of the uncertainties? Are there uncertainties in this mandate? Mark, I think the process of government formation is a process of consensus building. Political parties forge alliances. The ruling party had forged a number of pre-poll alliances. So now it is a question of consulting with alliance partners as to what should be the modality of government formation. This is not something new. This is something that we have seen on multiple occasions happen in the 75-year-long history. The initial part of our electoral journey had single-party majorities. We've had eras where there was some political uncertainty, but I think political parties have also now figured out as to how to navigate some of those uncertainties. Political parties have figured out as to how to have conversations on common grounds and stitch together a workable system of how they can align together. So that's one part of it. But I think another thing that we have to think about is that while elections lead to a government continuing in power or a new alliance coming into power, what does it mean for individual members of parliament? The people of our country have elected 543 members of parliament, and I think what would possibly be a good outcome of every election is that individual members of parliament, their voices will be empowered. Their parties will listen to them much more thoroughly. The consensus building process will require consultation, so MPs will be consulted, and which will allow members of parliament to put across the concerns of their constituents. Sometimes what happens is that when political parties are comfortably placed, then some of that consultation process could get diluted, and elections like this provide an opportunity for members of parliament to assert themselves across the political spectrum, whether it is the ruling alliances, whether it's the opposition alliances. So that's, I think, a good thing. You know, we were talking during the break, and you know, one of the panelists who was there was mentioning as to the kind of things to look forward to this election. And one of the points that came up was that the BSP has not registered any gains in this particular election. But I think there were about close to, I'm just looking at 9% of the vote. Yes, but I'm just trying to see as to how many candidates. So there was about 8,300 candidates that contested for 543 seats. BSP was a political party that fielded the maximum number of candidates ahead of the BJP and the Congress as well. So that's another interesting fact. Finally, now that we are close to what the final results would be, it'll be interesting to see as to what will be the composition of the new Lok Sabha. What are the kind of MPs will be coming across? Are they going to be young? Are they going to be middle-aged? You know, what will they represent? What kind of backgrounds will they come from? What kind of issues that they'll be interested in? So yes, for individuals like me who follow Parliament, that is going to be an interesting process, and I think for political commentators, the interesting process will be what will be the backroom negotiations and getting. But that's it. Are you saying, therefore, that a coalition government need not necessarily be seen as a handicap? No, I don't think so. I think coalition governments are not handicaps. Coalition governments are wonderful. Or if I may rephrase my question, will that hurt or impact or influence the so-called big ticket reforms or measures that the PM outlined during the election campaign, for instance? I don't think so. I think the idea of coalition governments
is how do you get everybody on the same page? Right. Now, it might happen that you might not get all the things that you want, but you can have a back and forth, you can have a conversation, and this is something that we've seen in the past. And that conversation could possibly also involve opposition parties, which has also happened in the past. You're hoping for an ideal situation, I believe, because I mean, what we've seen in Parliament is that there's been a lot of disruption rather than anything else. And when the opposition gets stronger, are we going to see more disruption? Is another question that comes to people's mind. Mark, I'm just, and I'm going to leave it at that. I think if you look at the 2014 result and the Parliament thereafter, a number of big ticket legislation got passed. Wherein there was a bipartisan approach. So if you look at GST, it required a bipartisan approach both in Lok Sabha and Rajya Sabha because the government did not have adequate numbers to get that legislation passed on its own. And it was able to do that. So I don't see as to why, or let me rephrase that. Coalition governments are an opportunity of doing things. Fair enough. Mark, we are told that another guest is joining us this time remotely. We have Sulaiman Mohammed, a Congress spokesperson, is joining us on this special broadcast. Mr. Mohammed, are you with us? Can you hear us? Yeah, very loud. All right, great. Good to have you on this special broadcast, Mr. Mohammed. First up, how would you characterize or describe the opposition alliance's performance in this election in general and the Congress's performance in particular? First of all, I want to thank the people of India who have voted for the Congress Party and India Alliance parties, which has, in turn, been instrumental in our fight to save the Constitution. At present, the picture seems that the India Alliance is having 233 seats, roughly. This can be, few numbers can be here and there. And the NDA is close to 290 or something. To my analysis and to the Congress Party's analysis, Narendra Modi ji has suffered a political and a moral defeat. He has fallen from 303 to close to 240 or 239 seats. This is despite all the resources he was having, no level playing field for the party in power, the BJP more categorically, I must say, and the opposition party, more particularly Congress parties whose accounts was frozen, election commission not being bipartisan, not putting up level playing field for all the parties, and there was no match. It was a complete non-level playing field. See the amount of resources BJP had. See how election commission has behaved in this election. Despite that, the India Alliance, led by the Congress Party and other parties, have put up very, very, outstanding fight in this election, and we are very happy that we have been able to, reach at this point, despite all flaws in the election. Now, I believe that tomorrow the India Alliance parties are having a meeting to decide the future course of action. Because Congress Party has individually got 100 seats, close to 100 seats, and the other parties also have their seats. So we can only take a decision that what can be next course of action only after having our alliance partners on board. And Mr. Modi, just analyze this election. What was the campaign of the Congress Party? It was issue-based campaign. It was about jobs. It was about farmers. It was about safety of women, their financial and social security. This was our campaign, a very positive campaign. These are the issues on which the election should be held. And see what was the campaign of the BJP. The BJP's campaign, led by Prime Minister Modi, was about mutton, machli, mangal sutra. जिसने ज्यादा बच्चे होते हैं उनको पैसा दे दिया जाएगा, मुसलमान, Hindu, and then in the end, very close person to him, he said, Ambani, Adani से कितने tempo में नोटें आएंगी. So this was the language, tone, and tenor of the Prime Minister. The country has analyzed this, that this is not the person who can lead us in future, and therefore this is the result. Although, we expected a far better result for our party and the opposition parties in the alliance parties. But despite this result,
We are very thankful to the people of the country. They have put us in a position where the constitution cannot be amended at the will and whims of the BJP, RSS and Mr. Modi. We'll give a tough fight. Let's see what comes out from our meeting tomorrow, India Alliance Partners meeting tomorrow, and then we can decide our future course of action. One more point I just remember. Please remember, when Mr. Rahul Gandhi decided not to contest from Amethi, all the media was after him, saying that he has run away from the contest, he has done this, he's going to lose. He has won the Raebareli seat by more than 3.5 lakh votes, and this more than 4 lakh votes, and Wayanad seat with 3.5 lakh votes. And Amethi seat, Smriti Iraniji's arrogance has been defeated by the people of Amethi. And Mr. KL Sharma has defeated her by 1.6 lakh votes. So these are clear indicators that the arrogance of BJP has actually lost, and the positive and humble campaign of the Congress Party and the India Alliance has won actually. The number game seems a bit different, but I think and I believe that tomorrow in our India Alliance meeting, we'll decide a strategy. That's it. Right, Mr. Mohammed, to stay with us, we've got some guests in the studio. Let me introduce you to them. Shantanu Gupta is an analyst and an author. He's joining us, and we need to bid farewell to Mr. Chaksu Roy, who is otherwise going to go somewhere else. Thank you very much for spending your time with us, Mr. Chaksu Roy, and giving us your views. Let's turn to Mr. Shekhar Iyer, who's been standing by. He's listened to the Prime Minister's speech. Mr. Shekhar Iyer, what do you have to say about the Prime Minister's speech and, what's likely to happen over the next few days in government formation? Well, 2-3 things come clear. The Prime Minister has, in fact, tried to convey that this is indeed an achievement for the NDA to come back to power. Though everybody is talking about the reduced numbers and all that, but it never has it happened that a government has come back for the third time. 2 terms you saw the party getting a good majority, and this time with the NDA, they are forming the government. The second thing he said was the BJP is ready to, join hands with political parties, other political parties, for the sake of national interest and carry out some major decisions, major steps that is needed to take India on the path of Viksit Bharat. So in a way conveying that BJP has no problems working with its alliance partners and also within other parties to, in a sense conveying that the BJP is fully accepted the new situation and it is driven by the larger objective of speeding up country's growth in terms of speed as well as scale. That's the third message he has given. And the other thing he has said is, yes, it was a very, very difficult elections. And the fact that the opposition had united, even despite that they were uniting, they have not been able to outbeat us. That also shows people's confidence in us. And now that the task has been re-entrusted to us, we are going to go ahead. I think there is a political message for the BJP workers and also a message that there may be, people who may still feel disheartened by that despite their hard work, the performance has come down. And of course, Prime Minister also praised the whole electoral process, the role played by Election Commission, because till the other day you saw questions being and doubts being created about the electoral process, EVM, Form 17. But today, even the opposition, we saw Kharge himself saying that we completely accept the whole electoral process, the way it has gone. So at least now the opposition will not have, fears about, things not going all right or things not being followed properly. So that part is also a very important thing. I think overall, the message is tomorrow, there will be a meeting of the NDA. TDP chairman Chandrababu Naidu is coming here. It is also expected Nitish Kumar may also join the meeting or send his representative. And the whole idea is, as fast as possible, they will go through the motion of electing a parliamentary party leader and then staking claim to form the next government. Right. We also have our correspondent Meghna Dev, who's joining us from. She's joining us from somewhere in Gujarat. Meghna, probably Ahmedabad, is it?
Yes, Ahmedabad. Meghna, so tell us, you put it into context for us, just one seat that BJP lost, but held on to everything else. So, how are people reacting to the results in Gujarat? Well, after the trends were clearly showing what the results would be like, the BJP state president for Gujarat, C.R. Patil, did do a press conference. He did say that they would probably introspect on what happened in Banaskantha. Banaskantha is basically a district in the north of Gujarat, where Geniben Thakur from the Congress has won against Rekhaben Chaudhary of the BJP. Now, Geniben Thakur comes from the Thakur community, which is quite a dominant community in Banaskantha especially. Besides that, also what we see is that the margin of winning is quite less. It's about 30,000 margin that Geniben Thakur has managed to win the seat. Obviously, it is a dent in the BJP basin, which the BJP the last two times it has been known for a clean sweep here, and that too with huge margins. But this time around, except for one seat, we definitely see good margins. Except for two seats. Banaskantha, BJP lost, and Patan, BJP did manage to win from around 30,000 votes. It's a very thin margin for that matter. The last time in 2019, there was a thin margin on the Dahod seat. The lowest margin which BJP did manage to win from was about 1,30,000 votes. It is about 2019. Now this time the BJP's lowest winning margin is about 30,000 seats from Patan. But rest of the seats, the BJP has managed to fare well and win with good margins. Be it obviously important seats like the Gandhinagar seat, which Amit Shah, BJP senior leader, has won from about 7,44,000 votes. Be it about C.R. Patil, who is the BJP state president contesting from Navsari. He has also won the Navsari seat. Mansukh Mandavya or Purushottam Rupala, all these people have managed to win with huge margins, 3 to 4 lakh margin, somewhere it's around 2.5 lakh margin. So what we definitely see is that the BJP has been able to secure the kind of vote percentage that they get in Gujarat. Now, having said that, the Congress did float two candidates from the Aam Aadmi Party under the Indi Alliance in Gujarat on the Bharuch and Bhavnagar seat. But unfortunately for the Indi Alliance, it did not yield any result in Gujarat, and both of those seats have been won by BJP candidates. Now, Bharuch is a seat in South Gujarat. Bhavnagar is also one of the important seats when we actually enter through Saurashtra. So these are some important seats where the Aam Aadmi Party candidates did not manage to win. Having said all of it, what we can analyze from these results, definitely what the BJP president of Gujarat said, that they will definitely introspect on what happened for the Banaskantha seat. But the rest of the seats, they have fared well, and compared to 2019, it's almost a similar kind of results that they have been getting. All right, we leave it there. Meghna, I know it's been a long day for all of us, including you, so we leave it there. Thank you so much. Appreciate it. All right, time to bring in our guest on this special broadcast. Mr. Shantanu Gupta is with us. Mr. Gupta, before we come to discuss about the takeaways from the electoral verdict and we analyze the results as they're coming in, let me ask you to put the tone, tenor and text of PM Modi's speech or victory speech, as it were, in its proper context for our viewers. Exactly. I was listening to the PM's speech in your office, in fact. And though the victory is not as expected, but I think the Josh was equally, Josh was unmatchable. And he was not only speaking rhetorical, he was also giving his vision, what he is going to do in multiple areas. Though I did not expect, I thought he will talk only rhetorical. Normally politicians talk after a victory, this is though a lesser victory though. But he was telling his plan, what he will do for the country, for the women, for the infrastructure. So that way I think, and there was all the multiple MPs, I was able to see a lot of recognizable face in the crowd. Everybody was super happy. I think BJP might be dented because of they did not get the victory that they wanted, but victory nonetheless, because they were having this election against many odds, right? We all know.
from Margaret Thatcher to Tony Blair, third term is difficult across the globe. Third term after Corona, most of the premiers and presidents and prime ministers who went after 2 elections after Corona, after the inflation deflation we've seen after the Ukraine-Russia war, they all got defeated. In fact, most of the people who brought GST or any kind of common tax code in the world, they got defeated. So he was against many odds. And in Indian politics also, he's only the second prime minister after Jawaharlal Nehru who will be having the third term. And those days are very different days, right? Where there were hardly any media, hardly on social media, hardly any opposition, right? Winning elections those days versus in 24/7, and everyone is a journalist with his mobile phone in the hand. So with all odds against, I think third term itself. And interestingly, they have an increase in the vote share still, right? From 37%, I think they moved to 38, 39%. Well, in percentage terms, it's about 36 point something, but in absolute terms, of course, it's gone up because the size of the electorate also has gone up. It has gone up, yeah. Right. But let's listen to what the Prime Minister said after achieving a resounding victory in the general election. India's Prime Minister Narendra Modi arrived at the Bharatiya Janata Party's headquarters in New Delhi. The Prime Minister addressed party workers at the headquarters, and he said that it's a victory of 140 crore people of India. आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। Prime Minister Narendra Modi thanked the people of Jammu and Kashmir for voting in record numbers. He said the voters of the Union Territory have shown the mirror to anti-India elements. इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। Right, and let me turn to Mr. Shantanu Gupta. We were talking about, vote percentage, and if we look actually in absolute terms, the BJP has gone up by about 30 million votes from last time round and polled more than almost 100 million votes more than the Congress party this time round. So, I mean, in a different kind of electoral scenario, that would work out to a huge victory. But since we follow the first past the post system and a different kind of system, one has to analyze the votes slightly differently. How would you put that? I think that's fine. That's right. In first past the poll system, because when there are multiple parties, it's which seat you won, because BJP is winning a lot of seats by huge margin. In Gujarat, I'm seeing people are winning by 5, 6, 4, 5. Shivraj Singh Chauhan itself in the 8 lakh margin. In fact, I call that as waste of vote in a way, because if he wins by like 5,000 votes, that's enough. And if that multiple lakhs of vote can shift somewhere else, and that's the problem with first past the poll system. But again, as Prime Minister was saying, magnanimity of and the largeness of Indian electoral system, I think salute to Election Commission. I think more we can thank them, salute them. It's not enough, I think. And this is the opportunity also to a message to all opposition parties who were discrediting Election Commission multiple times yesterday. Someone was saying this was not a EVM election, this was a DM election, right?
even someone as senior as Jairam Ramesh ki mass rigging chal rahi, and this all I think they should put to rest now. EVM theory should put to rest now. See, 64 crore voters, like that's huge, which is, I think the data is 1.5 times of G7 countries, 2.5 times of all EU countries together, 10.5 lakh booths, EVMs, returning officers, presiding officers, 70 to 80 lakh big force, and hardly any dispute. Even multiple Western countries, including America, have settled multiple elections in the courts. True. Right? And I think this is also a salute to Election Commission again, that how, and the people of India, that in this heat, they came out in large numbers, they voted in large numbers, and a lot of people say voting ज़्यादा होती है, voting कम होती है. In last time, in US voted 65-66%, UK voted 65-66%. So anything between 60 to 65% in the Western world is a good voting, right? India, which is comparatively less resource country, right? And electorate is not that educated also. Even then they're coming in large numbers. I think thumbs up to the whole process itself, right? And then giving a clear victory to Alliance. Mr. Mohammed, as Mr. Gupta in the studio was mentioning, will you for once and for all put the EVM speculation and controversy to rest now? So we can't hear you. Perhaps you're on mute. Oh, I'm sorry. No, we can hear you. Yeah. Now we can hear you. Please carry on. Yeah. So I was myself trying to come in on this, as Mr. Gupta said, that these speculations about Election Commission should be put to rest. Please try to understand. There were incidents where people were not allowed to vote. There have been incidents where they are pressing. It all happened post 2014 when they were pressing a button, but every wrong vote has been going to the BJP. Why haven't this happened in past 10 years? That somebody is pressing a button of BJP and the vote is going to Congress or Samajwadi or any other opposition parties. There have been apprehensions. And what the Congress party has demanded with the Election Commission, it was a very fair demand. Because as per the 2013 Supreme Court judgment, 5% of EVMs per assembly constituency has to be counted if there is some apprehension of wrongdoing. We said, please count all the 100% with the VVPAT slips and give the VVPAT slips to the voter and put them in the box. And the counting can be cross-verified. It will take some time, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. But it doesn't matter. The whole edifice of the democracy and the constitution rests on this. So if it takes 7 days, that doesn't matter. This result is going to decide the next 5 years and the future of the country. This is one thing. And we, in this election, in 35-40 days, Congress party has lodged 117 complaints with the Election Commission of India, 10 to 12 against the Prime Minister, 10 against the Home Minister, 7-8 against BJP President. But what Election Commission has done? Nothing, zero. They have not even given a notice. They have played like, to me, they look like paper tigers. They have not, exercised their authority. On daily basis, the Prime Minister and the BJP leaders were violating Model Code of Conduct and Representations of People Act. But Election Commission did nothing. I am telling one second, only 30 seconds. I am a voter in Rampur Lok Sabha constituency of UP. In December, 5th of December 2022, by-election to Rampur Assembly constituency happened. In front of my eyes, thousands and thousands of voters were beaten black and blue. They were not allowed to vote. That's okay, Mr. Mohammed, but now, at least now, will you put the entire controversy to rest is what we are asking you. I am telling you, Election Commission has not been fair. I have seen 1.5 years ago, a mandate was robbed by Election Commission police authorities in Rampur in front of my eyes. BJP for the first time in history won their seat. And this election also in Sambal, a lot of people were not allowed to vote. So it was not level playing field. What Election Commission has done, they have not acted on the... Fair enough, your point is well taken. May I take a moment to quickly introduce another guest who is joining us. BJP spokesman Shaina NC is also with us. So welcome to this special broadcast. What do you make of the verdict and how would you describe it or characterize it? I've just come from the Prime Minister's address to all of us Karyakartas, and it was extremely emotional,
At the same time, it enthused us completely because he said 2-3 things which I'd like to highlight here. Sure. Number one, he said that if you look at the verdict which has come, the BJP on its own is larger than this whole India alliance to start with. Second, this is only a mandate for stability, and he highlighted all the welfare schemes that we have done in the 10 years and without a trace of corruption. So it makes us as Karyakartas feel really great that we have a leader who is on the right path, and the trajectory is that he will only stick to the development course. He also spoke about the Election Commission and appreciated the effort, the kind of force of crores and crores of election officers who ensured that this election is free and fair. And to all those critics who were constantly critiquing us and saying, oh, EVM, Election Commission, exit poll, I think it puts to rest and it makes us feel great that we live in a flourishing democracy where in that democratic pattern you have free and fair elections. I think that is the biggest takeaway today. Indeed. Ms. NC, what would you make of, the overall results that they come? So see, yes, so the BJP has come down by a certain number of see, but you can't seats. get 100 on 100 in every exam in your life. Mm-hmm. I mean, and you cannot have that kind of a strike rate. We set the benchmark so high. So if the numbers fall, I don't think that that is a criticism. If at all, we are the type of party, look at what the Bharatiya Janata Party did vis-a-vis Kerala, Telangana, Andhra, even Odisha. We were never in these states, but the kind of work that was put in by us as a cadre to ensure that today in Odisha you have a BJP government. Sure. That's the kind of address and approach. So if you make up somewhere, you lose somewhere, and we do understand that the loss in Uttar Pradesh and Maharashtra needs to be dealt with immediately, and that's what we're proposing to do. And for the benefit of viewers joining us from India and around the world, watching this special broadcast would be wondering what should they expect from Modi 3.0 in terms of maybe big ticket reforms on the economic front or even foreign policy and security front. How would you give them a flavor of what to expect over the next several years? I think they should just expect a stable government that is on the path to progress. The Prime Minister highlighted how we have 22 aims, 680 medical colleges, the speed at which the railways, 150 airports, the list is endless. So we are on the development path, the economy from number 11 to number 5 going towards number 3. So we want to be a part of this. I won't even call it a dream of Viksit Bharat, but the reality of a Viksit Bharat. Indeed. There are some concerns that people have raised, experts have raised about the coalition. After all, it is not, the BJP doesn't have a majority on its own, so it doesn't have that kind of bandwidth to provide this kind of stability that you're talking about. In that context, would the coalition partners be expecting too much? Some people are concerned about that. How would you react? I think the coalitions of the NDA are very different to the alliances of the India Alliance. The India Alliance, they have come together to knock off somebody, the arithmetics of a seat, no ideology. On the other hand, the NDA is clear that Prime Minister Modi's vision should be realized with the support of our allies. And he did mention Chandrababu Naidu and Nitish Kumar as integral parts of this trajectory, because obviously they too want development in their home states. That's the only way they can come back to power. And we will obviously work with the center state kind of alliance. And at the same time, in the days to come, I'm sure the Prime Minister is a very decisive person, so you will know what the final portfolios are and how the government is going to be formed. Mark, let's also go to our other guest, Mr. Shekhar Iyer, who is with us. Mr. Iyer, just to amplify the point Ms. Shaina NC was making there, is coalition necessarily a bad word? As she was saying that the NDA alliance or coalition is more cohesive than any other. So how do you foresee how things might pan out in the near term as well? We were witness to the coalition led by Atal Bihari Vajpayee ji,
between 98 and 2004. They had an agenda of governance, and which in fact in 99 they went with the agenda of governance rather than a separate BJP manifesto. And the same thing happened in 2004 also. So the big point is, when it comes to handling coalition partners, definitely BJP has senior leaders who have had the experience of managing coalitions. So that should not be a problem. And today, one of the big messages coming from the Prime Minister was, BJP is willing to work with any political party when it comes to speed tracking India's growth story, when it comes to building up what is called the Viksit Bharat plans. So when the thing is nation first, India first, so for that BJP is willing to make any sacrifice for the sake of the country. That's a big message coming, because all along a question has been asked throughout the day today: can a strong leader like Prime Minister Modi will find it convenient to work with coalition partners like, say, TDP or JDU? I think the answer is, Modi ji is a very seasoned political leader, who has managed for the 10 years this government, and there have been many occasions where he has engaged other political leaders. So there is no reason to believe that that Modi will have some inhibitions in handling coalition partners. That is not true, and the message has come from Prime Minister himself today. But we have also seen coalitions, if you give me a second, we have also seen coalitions between 96 and 98 under Deve Gowda and IK Gujarat, with Congress providing the outside support, and how the support was withdrawn, and we have gone through that cycle. So if it is that kind of coalition, then there will be uncertainties, and the country could suffer. But this is a different coalition we are going to see, because with a committed BJP and committed alliance partners on a larger scale. Fair enough. Mr. Sulaiman, Mr. Sulaiman Mohammed, the India bloc is also a coalition, and now that you probably don't have the numbers, unlikely to cobble up the numbers to try and stake claim to form the government. In this context, is the India bloc likely to stay together? As after all, it was a pre-poll alliance. There's no real reason for your partners to stick together after the elections. 2-3 points. One, I heard BJP spokesperson Shaina. All BJP people have been very, categorically naming Chandrababu Naidu ji and Nitish Kumar. I don't know, but it seems that they are a bit fearful. They have 28 seats between them. 16 Chandrababu Naidu ji has, 12 Nitish Kumar ji has. If those 22 goes, they come back, they fall to 260 or 262. They don't have the majority. Why every BJP leader is mentioning Chandrababu Naidu and Nitish Kumar? They are not mentioning any other alliance partner, their NDA alliance partner. So one thing is this. Second, the Congress party and the India alliance, other parties in the alliance, we are going to have a meeting tomorrow, and we'll decide our next course of action, that how we have to take this fight further. Okay. And the whole fight was to save the constitution. Actually, by heart, Congress party and other alliance partner, more specifically, I should say Rahul Gandhi by heart, Mallikarjun ji by heart, the fight was to save the constitution. Fair enough. BJP's agenda was to change the constitution, to take away the reservation. That was we were fighting. And even by this result, if we go, we are in a position that will not allow this to happen. Mr. Mohammed, we are pressed for time, and we are looking for closing comments from everybody. So thanks. I'm sorry to interrupt you there. Yeah. Thanks. So let's hear you first, Mr. Gupta, and Ms. Shaina can have the last word. I think when Mr. Mohammed was saying India Alliance, I'm still not clear that is TMC, Left and Aam Aadmi Party are in India Alliance or not, because in multiple states they ran against Congress Party. And this lie, big lie of reservation, I think I'm sorry to say, this election, the biggest lie of this election was Amit Shah's Home Minister fake video ran by a sitting Chief Minister Revanth Reddy. I think when I was in UP, that stuck to the ground. Whenever you spread a rumor goes to 100 people and explanation only goes to 50 people, and very, very disturbed to say they're still maintaining their lie. So I think very, very disturbing trend coming from India. All right, Ms. Shaina NC gets the last word. Your thoughts, your final comments on this broadcast? I think this is history. History because you have the longest serving administrative head of a country in Narendra Modi ji. He's done a fantastic job in Gujarat,
excellent 10 years, unblemished, no stain on his path and trajectory, and he has his heart in the right place. He always says nation first, party next, individual last, and he breathes for this country. So I'm sure that this is going to be Modi 3.0 with the tweaking around that a lot of people may have wanted, and with the positives that we are on the path to a Viksit Bharat. But having said that, I'll just make one point that, you know, very often we have seen where the BJP and the Congress have fought. Obviously, the BJP has won. You have a lot of regional satraps where you take UP as a case study, and you've had so many divisions of votes happening there. Likewise, in Maharashtra, you take a case like Orissa, we have done so phenomenally well in a state where we really had the lotus never bloom. So in that sense, I think there's a lot to talk about and lots of takeaways. All right, on that optimistic note, shall we bid goodbye to our guests, Mark? Thank you very much, Ms. Thank you. Sensei. Thank you very much, Mr. Gupta and Mr. Shekhar Iyer and Mr. Mohammed. Thank you for joining us and trying to make sense and understand this verdict, and also to put it into context in terms of the mandate that the people of India have given to the NDA government, and a historic verdict, as the Prime Minister calls it, a third term for the NDA in a row, the first third term in a row since Jawaharlal Nehru. Also, one needs to put into context the coalition was pretty similar to Atal Bihari Vajpayee's time, because at that time too it was Chandrababu Naidu and the JDU, Nitish Kumar, who were part of that coalition. Right, let's take one final look on this special broadcast as the numbers, how they stack up. 291 and counting for the NDA. The opposition alliance is at 233 and others getting 19 in a house of 543. So that's 291 as compared to 233 for the opposition alliance. Remember, the halfway mark has always been 272. So the NDA is comfortably placed as of now at 291 and counting. And with that, it's a wrap on this special broadcast. But news continues here on DD India. You can catch all the latest news and updates on our social media and mobile and other platforms as well. Thanks from my side and you as well, Mark. Thanks a lot for watching. Namaskar.